let's start. So, if I talk about last few classes, so हमने I guess quant तो already खत्म कर चुके हैं हम लोग. Yes, quantitative aptitude we have already completed. We had started with logical reasoning. ठीक है, तो उसके टॉपिक हम खत्म कर रहे थे. And in logical reasoning also we have covered a lot of things. So today we are going to discuss one of the topic जो पूछा जाता है in GATE exam, that is about blood relationships. Now these questions may sound easy and sometimes but they become too difficult. जो हम देखेंगे आज की क्लास में, ये कैसे वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए जाते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे. Now the thing about blood relationship is that there is a trick to solve this kind of questions. ठीक है, तो हम वो ट्रिक या वो मेथड देखने की कोशिश करेंगे that what is the trick with the help of which this kind of questions can be solved very easily. ठीक है, देखो होते तो वैसे इजी ही हैं, they are not hard जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशनशिप के अंदर से. बट इफ यू फॉलो सर्टेन स्टेजेस, ये क्या होते हैं, इफ यू गिव यू शॉर्ट आंसर कि हाँ ये सही होने वाला, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनकरेक्ट. सो विल टॉक अबाउट कि क्या होता है इसके अंदर. फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन ब्लड रिलेशनशिप, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज ब्लड रिलेशनशिप्स. Right. So the first thing that we are going to study is about stages. Stages basically refers to the generation that we are talking about. ठीक है, कौन से जनरेशन की बात कर रहे होते हैं. सो हम जो एज ए ह्यूमन बीइंग अगर बात करूं, हम अपने लेवल की अगर बात करते हैं, सो वी आर ऑलवेज एट द थर्ड लेवल. We are always at the third level, and along with us we have in the third level हमारे पास siblings होते हैं, हमारे भाई, brothers, sisters, right? Then cousins होते हैं and in-laws होते हैं, brother in law, sister in law. ये सब हमारे स्टेज के अंदर होते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक ऊपर जाऊं, सेकंड स्टेज पे जाता हूँ अगर, ठीक है, तो सेकंड स्टेज मतलब हमसे एक जनरेशन ऊपर. तो हमसे एक जनरेशन ऊपर हमारे कौन होंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे सबसे पहले. तो ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स हो जाएंगे. सेकंड जो होंगे वो होंगे हमारे इन लॉज, राइट? सो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सेकंड स्टेज. अच्छा, उससे ऊपर अगर मैं जाता हूँ फर्स्ट स्टेज पे, सो इनसे एक जनरेशन ऊपर यानी कि हम ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं. अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स में वी डोंट हैव एनी ऑफ द इन लॉज काइंड ऑफ थिंग. सो ग्रैंड पेरेंट्स आर ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मैटरनल या पैटर्नल, ये दो चीजें आती है, बट ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव डाउन लिटिल बिट. सो अगर मैं फोर्थ स्टेज की बात करता हूँ कि हमारी जनरेशन से नीचे वाली जनरेशन जो आएगी, दैट विल बी योर चिल्ड्रंस एंड अगेन चिल्ड्रन इन लॉ, लाइक सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, उसकी बात होती है. एंड फिफ्थ स्टेज की अगर हम बात करते हैं, तो फिफ्थ स्टेज में हमारे पास आ जाते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन. नाउ ग्रैंड चिल्ड्रन के अंदर इन लॉज दे डोंट कम, रादर देन सिंपली क्या आएगा, आइदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल. ठीक है, सिंपल ऐसा आएगा. ठीक है, तो ये हम 5 स्टेजेस में जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड दिस 5 स्टेजेस. अब ये 5 स्टेजेस का हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फॉर्म अ नेटवर्क डायग्राम. विल फॉर्म अ नेटवर्क डायग्राम टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक टू फॉर्म नेटवर्क डायग्राम. लेकिन नेटवर्क डायग्राम जब भी हम सॉल्व करते हैं, दो चीजें हमको पता होनी चाहिए. एक तो हमारे जो नोटेशंस जो हम यूज करने वाले हैं, जिसके हम आगे बात करते हैं, एंड सेकंड रिलेशनशिप्स के बारे में कि कौन कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं इन केस ऑफ आवर फैमिली, कौन कौन से रिलेशनशिप. So let's talk about them first कि कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं. Then we'll talk about कि कौन कौन से नोटेशंस हम यूज करते हैं. So if your mother's or father's brother is what we are referring to, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं, so in general we call them uncle. ठीक है, to differentiate between maternal and mother and father's brother, we refer usually maternal or paternal. ठीक है, हम ये रेफर करते हैं. Similarly, if you talk about mother's or father's sister, she become your aunt. And in the same way, it can be either maternal aunt or paternal aunt. If you talk about mother's or father's mother, they are generally referred as
ग्रैंडमदर। रेयर केस होता है जहां पर मैटरनल और पैटर्नल अलग अलग दिए हुए होते हैं, वरना भी इन जनरल वी टेक दैट इट इज अ ग्रैंडमदर की बात हो रही है, ग्रैंडफादर की बात हो रही है। अच्छा, इन केस इफ इट इज नॉट रेफर्ड देन बाय डिफॉल्ट इट इज पैटर्नल जिसकी बात हो रही है। Father's father is a grandfather. In fact, mother's father is also a grandfather. Okay. Then, if you talk about children's children, they are your grandchildren. You might feel like मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, these things you already know, but this is what we are going to use. Right. Similarly, if you have a daughter, right? If you have a daughter, then her husband, daughter's husband, will be your son-in-law. Right. Similarly, if you have a son and we're talking about his wife, then it becomes your daughter-in-law. Right. Now, okay. If you have a sister or brother and we are referring to his son or her son, in general, we use the word nephew. Similarly, if you are referring to sister or brother's daughter, then in general we use the word niece. ठीक है, तो ये जनरल जो रिलेशंस होते हैं which are most commonly given in the exam, so these are the relations that we are going to refer to in most of the cases. ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा. Now let's see the next part. हाँ, जो मैं बात कर रहा था नोटेशंस की. So we always use certain codes to denote a lot of things. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कोड्स की, जो कोड्स which are referred which are preferred to use. बाकी अगर आप directly solve कर सकते हो then it is fine. But if you are using these codes, certainly it will make your solution quicker and सबसे important चीज, you will not get confused anywhere. ठीक है, सबसे ये important चीज होती है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, हमारा confusion बहुत ज्यादा होता है. So जो कोड्स है अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, जो नोटेशन है अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, I'll get the short आंसर कि हाँ यही है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला कोड जो होता है नाम का होता है. Right. So if you talk about Ramesh, it will be represented by R. As simple as that. If you talk about Yogesh, it will be represented by Y. Now, if there are certain names, जो जिन मतलब कोई ऐसे अल्फाबेट्स है जिनके दो दो नाम दिए हुए हैं, like जैसे स्नेहा and Sheila. Right. So Sneha can be represented as S or Sheila can be represented as SH. So this will clear your confusion कि कौन कौन से word हम use कर रहे हैं. But this kind of notation will save your time in writing the entire number. ठीक है. Now there are certain places. Let's talk about them in points. तो पहला point यही होगा. There are certain places वहाँ जहाँ gender important होता है. Sorry, where the gender is important. जहाँ पर gender important होता है. So the gender is important. We have to show it. Right. We have to indicate it. So we denote it separately. So if the gender is important, you have to notice separately. अब ये separately कैसे करने जाएंगे? So for example, I'll just give you this part that if there is a female, you always underline the alphabet. Underline the alphabet. For example, let's take an example. So let's say if we're referring Sheila, we will write down SH underline. Now this will refer that it is Sheila and it is has been mentioned as a female. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने मेंशन किया that she is a female. Now second confusion जो बहुत बार होती है like spouses. Spouses is the husband wife relationship. ठीक है, तो this relationship you had to be very careful about. Because बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं, वो पूछ लेंगे आपसे what is who और x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या है. So ultimately if you solve them you will get that वो दोनों husband wife ही है. But again you should be able to identify कि भाई वो relationship सच्ची में आ रहा है नहीं. So how do we look write that part? पहली चीज तो देखो, जैसे हमने शीला के लिए यूज किया था, that underline तो करना ही है. ठीक है, so that will give you कि भाई who is the wife and who is the husband. Second हम arrow use करते हैं. This kind of arrows are used.
राइट. सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है. लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन. पहला, आर आर इज फॉर रमेश. रमेश, ठीक है, दैट इज योर हस्बैंड. ठीक है. सो आई विल राइट डाउन इट इन अदर वे. लेट्स से हस्बैंड, which in this case is Ramesh. It is preferred to write down the husband on the left. Always. ठीक है, प्रेफर किया जाता है. नाउ इफ यू आर राइटिंग इट ऑन द राइट, दैट डजंट मेक इट इज रॉन्ग, बट ये आपका एक कॉमन नोटेशन होगा, सो दैट विल हेल्प यू आउट. सिमिलरली वाइफ इज ऑलवेज ऑन द राइट. ठीक है. इन जनरल ये जो चीज है ना, ये हम मेल फीमेल के लिए भी यूज करेंगे. तो मेल विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड फीमेल विल बी ऑन द राइट साइड. लाइक इन केस ऑफ ब्रदर सिस्टर्स आल्सो विल बी यूजिंग द सेम नोटेशंस. ठीक है. तो इसको मैं बोल दूंगा यहाँ पर. दिस इज अ पार्ट ऑफ सबसेट और सब रूल which says that woman on right and men on left. ये हम कॉमनली यूज करेंगे. ठीक है. तो इसको हम देख लेते हैं और कहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो यस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ब्रदर सिस्टर होंगे तो उसमें भी ये चीज आएगी. सो लेट्स टॉक अबाउट सिबलिंग्स. सो जैसे कि हमने हस्बैंड वाइफ में किया, वी आर यूजिंग कॉमन एरो ओवर हियर. ठीक है. यहाँ पर एक एरो यूज किया जा रहा है जिससे पता चल जाता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है. नाउ इफ आई यूज द सेम एरोज फॉर सिबलिंग्स, सो विल गेट कंफ्यूज्ड. सो इस चीज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो नोटेशन है वो चेंज करते हैं. सो वी यूज दिस काइंड ऑफ डॉट्स, either two dots or three dots, this is your choice. हम dots use करते हैं. So if you just write down like this, let's say r triple dot s, और s को अंडरलाइन कर देते हैं. देखो यहाँ पर कितनी चीजें पता चल रही है. दैट रमेश, देखो एक तो लेफ्ट साइड में, सो इट इज गोइंग टू बी मेल. ठीक है. सो रमेश इज द ब्रदर ऑफ, नाउ s इज फीमेल, और फीमेल हमने s में क्या डिनोट किया था यहाँ पर, स्नेहा. सो यस, s इज द ब्रदर ऑफ, और r इज द ब्रदर ऑफ स्नेहा. ठीक है. सो रमेश इज द ब्रदर ऑफ स्नेहा. यहाँ से डायरेक्टली पता चल जा रहा है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी. अब इसके अलावा अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है, जहां पर वर्ड ओनली यूज किया जाता है. सो बेसिकली इफ देयर इज सम वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग, ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है जो हमें ध्यान रखना है. लाइक ओनली सर. सो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, ओनली को एम्फसाइज किया हुआ है. ठीक है, अगर आप समझो तो लाइक ओनली डॉटर. तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन दिया जाता है बहुत बड़ा, हम सॉल्व करते हैं तो खुद हस्बैंड वाइफ निकलते हैं. सो वो ये वाला केस होता है जहाँ पर ओनली डॉटर ओनली सन दिया होता है. सो हम उसको जब यूज करने जाते हैं, सो विल गेट कि भाई वो आपस में एक ही इंसान है जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो टू शो समथिंग, टू शो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यूज अ बॉक्स. ठीक है. सो लेट्स सी कैसे मैं बोल रहा हूँ आपको. सो इफ आई से आर ट्रिपल डॉट एस डैश, ये तो हमने ऊपर किया हुआ है, द रमेश इज द ब्रदर ऑफ स्नेहा. अब मैं एस को अगर अंडरलाइन कर देता हूँ, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चीज हो जाएगी ये स्नेहा के लिए बन जाएगी. दैट स्नेहा इज द ओनली सिस्टर ऑफ रमेश. ठीक है. सिंपली स्नेहा इज द ओनली, क्योंकि हमने स्नेहा को यहाँ पर किया. अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि भाई ये चीज अगर ऐसी हो, लाइक आर, हमने क्या किया था पिछली बार, आर पे लिया था ना. हाँ. सो आर एरो एस एच, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एंड इफ आई बॉक्स दिस पार्ट, ठीक है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट. सो व्हाट इट मीन टू से दैट रमेश इज द, जिसका एस एच को अंडरलाइन कर दो, इज द ओनली हस्बैंड ऑफ स्टे. क्या लिया हुआ है, स्टे लिया हुआ है. Right. So that actually doesn't make sense. Only husband, right? Why would she would be having multiple, you know?
सो ये चीज सेंस नहीं बनाती, बट दिस इज यूजफुल फॉर सन डॉटर सिबलिंग्स, उस चीज के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है।